pursue a career in law, what are the right things that you need to do? Most of you are planning to pursue BLLB or any law degree in this coming time. So, what college to choose, what all efforts you need to make in case you have already chosen a college and you have already you feel if you are at the wrong place, what to do so that you can either save yourself or to make some efforts in order to undo the mistakes that you've made. And last but not the least, the two things that you are chasing in college, which of that is most important? So the colleges to choose, what to do in case if you're stuck in the wrong place, and how to strengthen yourself so that after you graduate you are not in the list of those unemployed lawyers after graduation. Hello and welcome to this video. In this video, very small video, I will try to guide you based on my and experiences of many others which have helped me to make this video so that I can show you the right path to those of you who are planning to pursue a career in law. Firstly, for those of you who are still safe, who are still applying for a BLLB degree, who who are still preparing for entrance exams, the right option, and of course, what most of us know is that the best universities in the country are, of course, we actually can classify these into three categories. First is the first tier universities, which are, of course, all the national law schools that we see, uh, which actually attract almost the smartest minds of the country. The second category is the tier 2 universities, which are some other universities like the tier 1 universities can be the NLUs, National Law School University, NALSAR, all the NLUs basically, which are existing, which are right there right now. The second tier universities are the ones which include some of the government ones, which are the also some of the private ones like GLC Mumbai, Symbiosis, and many others. These come under the tier 2 universities. Then come the tier 3 universities, which are not very old, which are fairly new, and unfortunately, they are unable to provide you with certain skills. More importantly, the students that get selected are who are really serious about their career and who actually make a lot of effort to pursue their dreams, they end up going in the tier 1 and tier 2 universities. So the problem that most students face in the tier 2 or 3 universities is sometimes not getting the right direction, not getting the right guidance, and secondly, you do not have enough competition around you. The result is that you run after two things in college. आप लोग दो चीजों के पीछे कॉलेज में भागते हो. First of, let me try and guess. If anyone can help me answer this question, what are the two things which you chase in college? It is very simple. If we include girls, it will be three. But right now, let's stick to two things. What are the two things that every college student chases in college? दो चीजें. क्या किसी के पास इसका सही आंसर है? Please let me know in the comments. What do you feel for these two things, which every person who has already taken admission into law school, what do you chase? Okay, attendance and assignments. What do the others think? Very quickly. I need to hear what you have in mind. What are the two things that you chase in law school? CGP, attendance. Okay. What do the others think? Yes. So most of you have said we actually chase just two things. One is attendance, second is marks. If I told you that none of that is going to help you to secure, uh, because when you go before an employer, he will neither value your attendance nor will he value the marks if you are coming from a tier 3 university. Unless you are in the top 3 performers of your batch, then it's an exceptional case. But unfortunately, no one values these two things. So it is a very eye opening thing for you to do, that how you can actually survive law school if you are already stuck in the wrong place. Let's get started first. First thing is, for those of you who are seeking admission, my
honest advice to you is that try giving your best, put in all the efforts to practice all the mock papers which are there. At least 100 mock papers you must practice, which is the tips that I've got from those who have secured an admission. Till the time you don't practice 100 mock papers, don't say that I've given my 100%. And if you've not given your 100%, it is you who is going to suffer in the end. So please make sure to give in at least 100 mock papers before you appear before your common law admission test. कैसे भी करके admission. Or second option is for you, which is of course the best, and try to secure at least first or the second tier colleges and avoid going into the third tier universities. That would be a honest advice you at this point of time. I actually believe in being honest rather than giving you fake expectations के कुछ भी उसमें नहीं है, इसमें नहीं है. It all depends on your hard work, because कहीं ना कहीं वो hard work आप नहीं कर पाते, unfortunately. दूसरा चीज जो है, that what in case if you're stuck in the wrong university, if you're there in the first year, many of you might have a question that क्या क्या हम ये ड्रॉप करके एनएलयूज में ट्राई करें. यस, आप एक क्या 2 साल भी ड्रॉप करके एनएलयू में ट्राई कर सकते हो. 20 years is the criteria set up by the bar council to get admission into BLB. So give in your best effort, give in at least 100 mock papers, put in your best efforts, and एक क्या अगर 2 साल भी skip करने पड़ जाएं, so you do not hesitate in doing that. That would be my advice at this point of time. दूसरा ऑप्शन, इन केस इफ यू स्टिल फील दैट आपके लिए करना फिजिबल नहीं है और आप कंटिन्यू करना चाहोगे, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. जस्ट टेक केयर ऑफ दीज 2-3 पॉइंट यूनिवर्सिटी में स्टक हो, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि जो सिचुएशन आपके आसपास है, जो लैक ऑफ कॉम्पिटिशन है, वो आपको जो है कहीं ना कहीं ऐसा बना देगा जिसको एक एम्प्लॉयर वैल्यू नहीं करेगा. राइट तो अगर एम्प्लॉयर आपको वैल्यू नहीं करेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो सैलरी नहीं मिलेगी. अनलेस एंड अनटिल यू कम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड. अगर आप एक लीगल बैकग्राउंड से हैं और you are for sure you could get secure admission, then of course it is not going to be difficult, or unless you have certain contacts which are going to help you get into certain companies or into any law firm. But however, if you feel that you are alone, then try focusing on these 3 tips, and I'm sure it will help you to secure a better job after you graduate. Firstly, how to get job as a law fresher के बारे में I have already made a detailed video. Please make sure to go through that video. Second thing is, I have already made a video on how you should choose a direction. आप एक direction पकड़ो, how you can choose that direction, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, in which after going through that video you will understand what are the options available in front of you, और उन options को आप कैसे एक सही डायरेक्शन पकड़ सकते हो, so that you choose what you are good at. Because a lot of you have this question कि भाई what am I good at, how do I know, I don't even know that. So choose this particular direction, and I'm sure you would be able to find out, you will be able to figure out what you're good at, and after you figure that out, you're going to be actually spending time on strengthening that, so that after you graduate, you will be somewhere and you will be able to express to the employer when he asks you. अगर just imagine, अगर आप litigation में जाते हो और आप अपने employer को बोलते हो, I am well educated, I was good in college, I was good in sports, I have the dedication, I have the hard work, I will do whatever I can to help you with your litigation. Versus, I have practiced, since you are into criminal law, I very nicely have understood the concepts of FIR. I understand that as soon as an FIR is registered, we need to be prepared with so and so documents. In my so and so internships, I had the opportunity to go through those documents. So I'm very much well versed with those documents. I will be able to give in my best effort in that. In drafting a bail application, I've drafted so many bail applications during my so and so internships, and these are some of my previous bail applications. Please have a look at that. I'm sure in your court, if you have a matter tomorrow, I can for sure give you a draft of an application. I can prepare bonds, I can do this, I can do that, and also I'll be assisting you. And in case if you are not able to turn up for that hearing, I will put in some effort, and within a month or 2, I will be on top of this subject. So I will help you in that as well. Apart from that, आप समझ लो कुछ फर्क लग रहा है आपको इसमें दोनों चीजों में. आप अगले को ये बात बता रहे हो कि जो चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो
उसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मुझे वो चीज़ें आती हैं, मेरे पास चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो दिस विल हैव फॉर श्योर एनी वेटेज। मैंने एक एग्जांपल देके बताया, अगर उसका सिविल में मामला है तो आप बताओ मैंने नोटिस प्रैक्टिस किए हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने इन मैटर्स पे काम किया है, और प्लेंट ड्राफ्ट करते टाइम ये चीज़ें जिनकी जरूरत होती है मेरे पास उतने ड्राफ्ट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने यू गेटिंग द पॉइंट। सो यू हैव टू कन्विंस दैट पर्सन दैट यू आर एबल टू डू दैट। That is actually kind of going to help you. So please try focusing on these things, which I'm about to say. Three things which you should do is, firstly, firstly, you may not believe that, but have as much fun as you can during your law school. Yes, but make sure to get good marks जो एक महीना पहले होता है। मेक श्योर कि आप किसी भी सब्जेक्ट में 50% से कम ना लाएं, एटलीस्ट पास कर लें उसको, 50% पासिंग क्राइटेरिया होता है। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। हैव वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लिव वट एवर लाइफ यू वॉन्ट, बस प्लीज मेक श्योर कि कैसे भी करके एग्जाम आप फेल ना करें, अदरवाइज दिस हैविंग फन थिंग इज टोटली नलिफाइड, कोई मतलब नहीं रहता उसका। दूसरी चीज ये कि अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आप अपनी किसी भी चीज से ज्यादा फोकस करें। कम से कम वो जो 2 महीने मिलते हैं आपको या 1 महीना मिलता है, आप सीरियसली फोकस करें हर साल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट 1 और 2 ईयर्स, हर साल आप फोकस करें, आप उस ट्रेनिंग से चीजें प्रैक्टिकली करना सीखें। बिकॉज जब आप काम मांगने जाएंगे, पीपल विल आस्क यू व्हाट इज योर प्रैक्टिकल, हाउ कैन यू हेल्प मी इन सो एंड सो वेज। प्रैक्टिकल चीजें करें, अगर आप लिटिगेशन में जानी है, अगर आपने कॉर्पोरेट साइड में जाना है, तो सी व्हाट दैट इंडस्ट्री इज डिमांडिंग। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हाउ टू कन्विंस एन एचआर टू गेट यू। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू मस्ट डू इन योर फर्स्ट 5 years सो दैट यू आर एबल टू गेट इन टू अ गुड कंपनी। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, यू विल हैव अ लुक एट दैट। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा उसको लिस्ट करने की। सो आफ्टर यू हैव ऑल दीज टूल्स, यू कैन नॉट लेटर ऑन से कि यार मेरे को तो नहीं पता था कैसे करना है। नाउ इज एक्चुअली द चांस। even if you are stuck at the wrong place, don't lose hope. See, don't think कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। As I've said in one of my videos कि बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी 10 साल के अंदर जो है ना वो जीनियस बन सकता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। मैंने कई एग्जाम्पल्स जो है अपनी वीडियोज में दिए हैं। सो डोंट थिंक कि मेरा कुछ नहीं हो सकता इफ आई एम स्टक एट द रॉन्ग प्लेस। टेक द राइट डिसीजंस, बिकॉज इसके आगे की जर्नी अब आपके हाथ में है। My purpose of this is to guide those who are connected to the channel, who are supporting the channel, to guide them what is right for them. So that's why I've given you very honest and realistic advice and not any फालतू का ज्ञान। सो प्रैक्टिकल समझते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि टीयर 1 में पहले कैसे भी करके एडमिट हो, या टीयर 2 में जाएं, टीयर 3 में ना जाना पड़े किसी वजह से। इफ यू आर स्टक इन टीयर 3, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। हैव फन एज मच एज यू कैन, बट डू नॉट फेल एनी सब्जेक्ट। प्लीज डू नॉट फेल एनी सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग इज अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को, दूसरी चीज ऑफ कोर्स डो नॉट फेल एनी सब्जेक्ट। एंड थर्ड थिंग इज प्लीज टेक योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीरियसली, ताकि आप उस टाइम में जो सीखोगे वो आपको 5 साल बाद बोलना है कि मैंने इन चीजों में अपने आप को स्ट्रेंथन किया है। आप बेल के बारे में 2 चीजें सीखते हो अपनी ट्रेनिंग में, उसके बाद आप किताब पढ़ सकते हो, उसके बाद आप उससे और स्ट्रेंथन कर सकते हो, उसके बाद आप अगले साल दोबारा वंस यू गो फॉर द ट्रेनिंग, देन यू कैन एक्चुअली ट्राई टू ड्राफ्ट पिटिशंस। In the first time you can understand how to argue, how to do this. Second time you can actually try to draft petitions. You can read books, you can see उससे रिलेटेड कौन सी बेस्ट बुक्स गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है। बेल का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू गेट एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड। फिर उसके बाद अगले साल जो है सीनियर से पूछो कि आप ऐसा क्या मेरे से एक्सपेक्ट करोगे जब मैं आपके पास हूँ। दिस आई ऑलरेडी कवर्ड दीज पॉइंट्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू वंस यू एंटर द प्रोफेशन। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू सम वैल्यू आफ्टर यू ग्रेजुएट। सो इस पर भी वीडियो जो है मैंने डिटेल में रखी हुई है कि कैसे जो है आप एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं, व्हाट टू डू इन दीज 5 years विच इज गोइंग टू हेल्प यू आफ्टर यू ग्रेजुएट। वरना प्रॉब्लम ये है कि सी आप कुछ ना कुछ फॉर श्योर कर लोगे, राइट। इवन इफ यू डोंट डू दीज थिंग विच आई एम सेइंग, यू विल समहाउ मैनेज समथिंग दैट इज फॉर श्योर, बट उसमें स्ट्रगल बहुत होगा, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स गो थ्रू करने पड़ेंगे। सो वो सारे प्रॉब्लम्स आप गो थ्रू ना करो और कई चीज़ों पर आप इफेक्टिवली काम कर लो, because you're connected to the channel, because you're supporting the channel. So it is my duty to help you with the things that I know, the things that I have researched, and the things that I have understood based on those experiences. तो बस ये सब चीज़ें हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्क्स एंड अटेंडेंस। इससे अब थोड़ा सा आगे सोचो, बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, रद्दी के दाम इस चीज़ के नहीं है।
right? So please make sure you start thinking beyond these things and try focusing on these points very quickly. I think that is all what I wanted to convey to you. किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ किसी ने पूछना है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. एनएलयूज फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आते हैं जितने भी इंटरनेशनल लॉ स्कूल्स हैं. फर्स्ट सेकेंड ईयर में आते हैं जितने भी जीएलसी, सिम्बायोसिस, फैकल्टी ऑफ लॉ एक्चुअली कम्स इन द फर्स्ट कैटेगरी. देन अपने जो एरिया है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें एक लॉ फैकल्टी है, दैट इज द बेस्ट वन. ऐसे जो टीयर टू यूनिवर्सिटीज़ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो अभी आई थिंक टीयर टू में आती है. सो उसके अलावा जो 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 बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, जो बहुत रिसेंटली कम अप हुई हैं एंड दे हैव वेरी टेम्पटिंग एड्स कि एड्स में क्या दिखाते हैं, वो बिल्डिंग्स दिखाते हैं, लड़कियों की फोटोज़ दिखाते हैं, राइट वही दिखाते हैं. इस वीडियो में बात कर चुका हूँ मैं, अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको डिटेल में, उसके बारे में बात कर चुका हूँ पहले. सो दे जस्ट ट्राई टू टेम्प्ट यू बिकॉज I ask many people. I just got a chance to speak to one of my editors. He is just in his third year now. I asked him his university and I asked him, okay, we all make mistakes, but why did you end up there? He said, sir, मैंने search किया, best top universities, उस यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, मैंने अप्लाई कर दिया. अरे भाई पैसे देके भी तो वो सर्च कर सकते हैं और आप जो फीस पे करोगे उससे उन पैसों की रिकवरी हो जाएगी. सो वाई डिड यू मेक दैट मिस्टेक? तो ये चीज़ें लोग कहीं ना कहीं मिसगाइड होते हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके गलती करते हैं. तो दैट इज द प्रॉब्लम. येस, आई थिंक टीयर टू बीवीपी इज अ recognized and a good university. tier 2 for sure, tier 2 for sure. और इसका मतलब ये नहीं tier 1 tier 2 में ऐसा कोई बहुत डिफरेंस है. what I'm trying to say is wherever you are, just make sure you follow these points, right? Because हमारे पास ऐसे कई सारे examples है who come from a very mediocre university but still they are able to do so well. And that I have already covered in the first part of the video, that if you're in the top 5, top 3 good performers, then there is no stopping you. Nothing is going to stop you. Because in the end, a company will ask you two questions. First thing is your university, if it's a national law, good branding. Second thing is आपका बैच का रैंक क्या है. अगर आप अपने बैच में टॉप 3 में आए हो तो कुछ तो होगे ना आप, जो आपने वो चीज़ अचीव करी है. सो दैट इज व्हाट विल एक्चुअली हेल्प यू. टॉप 3 में नहीं आते, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करो. बिकॉज if you are in the top 3, then the person knows that he will do it. मतलब he has the potential to do, ये मेरा time waste नहीं करेगा. But if you are not in the top 3 and still you have worked on some things, then you can convince the employer that I have not studied maybe, but I have invested my time in the things that I like. Simple logic है, makes sense. प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कुछ बात होने वाली है मेरी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है इस वीडियो पे, तो आप लोगों को गाइडेंस के लिए मैंने बनाई थी. प्लीज़ सही से इन्फॉर्मेशन ले लो और उनको क्या जवाब देना होगा आगे वो मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू पुट मी इन सम ट्रबल, बट नेवरदलेस आई एम ऑलरेडी स्टक इन थर्ड ईयर. ओके, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. इफ़ यू आर स्टिल इन थर्ड और फोर्थ ईयर, try doing those things. I'll put the links of those videos in the description. Try to understand. First is that 58-minute video which is how to understand what you should do. ठीक है, वो आप पहले समझ लो कि आपको भाई करना क्या है, लिटिगेशन में जाना है कि कॉर्पोरेट में जाना है. वंस यू हैव नोन कि मुझे क्या करने में खुशी मिलेगी, आई हैव टोल्ड यू if you want to do this then do this, if you want to do that then उसके ये benefits हैं. तो that I have absolutely told you. First figure out that. Once you figure that out, then keep working in that direction. उसके बाद मैंने और वीडियो बनाई है हाउ टू गेट एज अ फ्रेशर हाउ टू गेट एडमिटेड. उसके बाद आई हैव ऑल्सो मेड वन लाइव इन द लास्ट वीक इन विच आई हैव कवर्ड अप दीज पॉइंट्स दैट हाउ टू. आप में से कई लोग थे उस लाइव में, प्लीज़ बता दो यार, हेल्प कर दो मेरे को, ध्यान नहीं आई थिंक मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात की. ड्राफ्टिंग, हाँ ड्राफ्टिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो. और कई मैंने पॉइंट्स रहे थे कि जब आप कोर्ट में आर्ग्यू करते हो तो व्हाट आर द पॉइंट्स यू मस्ट कीप इन माइंड. तो दैट ऑल्सो आई हैड कवर्ड इन दैट वीडियो. सो ये सारी वीडियोज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. दिस रिकॉर्डेड दिस लाइव दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, यू विल हैव इट as an uploaded video as well. So if you have any doubts or question, please don't hesitate to ask. All those who have previously been associated or somehow
sent us some research or have worked with us or are supporting the channel, आपके लिए our Instagram is always open. फालतू की चीज़ें होंगी तो ऑफ कोर्स आई डू नॉट रिप्लाई टू दैट, बट इफ यू हैव सेंसिबल क्वेश्चंस इन नोइंग द राइट थिंग्स, I of course reply to your Instagram messages. If you are actually trying to seek more research papers, for that you should get connected to our LinkedIn handle. LinkedIn पे it is, we have tons of research papers which are prepared by law students, थोड़ा सा and which are polished and then uploaded on our LinkedIn handle. तो उसमें बहुत तरह के research papers हैं. कल को आपको projects भी बनाने हो तो you can take inspiration from that. Don't blindly copy that. Take inspiration from that and make sure कि मैं how can I improvise on that. So you'll get a lot of material from our LinkedIn handle as well. You can also connect to our Facebook and Twitter handles, and from Instagram, if you have any doubts or specific questions, you can reply there. And with a specific topic on a specific video, if you have any doubt or questions, you can just comment and I reply to all the comments. So you will not have any complaints over there. So I think that's pretty much it. If there are any last questions, I can take them. If not, what about Chaudhary Charan Singh, Lloyd Law College? Unfortunately, tier 3 की कैटेगरी में, एज पर स्टैटिस्टिक्स, एज पर रैंकिंग्स, टीयर 3 की यूनिवर्सिटी में आते हैं. बट अगेन देर इज़ नो हार्म, अगर आप वहाँ पे हो, स्टिल देर आर पीपल हु हैव बीन इन मच वर्स यूनिवर्सिटीज़ एंड हैव स्टिल परफॉर्म्ड. तो कैसे परफॉर्म करना है उस पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपको आसानी होगी. मैं नहीं कहता आपका कुछ नहीं होगा, आपका फॉर श्योर कुछ हो जाएगा. राइट, इफ यू आर अ गुड पर्सन, आपका आपने मेहनत करी, कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा. बस वो स्ट्रगल आपको कम करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू. द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज नॉट टू डीमोरलाइज एनी यूनिवर्सिटी, बट इट इज जस्ट टू शो यू दैट कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्सिटी में भी आपकी थोड़ा मान ले दम हो गया, आपकी जो वो है, जो आपकी आसपास के लोग हैं, आप ये देखो कि जिन लोगों ने मेहनत करी है, जिन लोगों ने प्रूव किया है, वो दे बिन सेलेक्टेड. बट जो लोग उस स्टेप में फेल हो जाते हैं, वो लोग जो है फिर आपके साथ होंगे. एंड ऐसा हो सकता है कि वहां पे कम कंपटीशन होने की वजह से आप मोटिवेट ना हो पाओ. तो मे बी द यूनिवर्सिटी, टीयर 3 यूनिवर्सिटी इज फाइन, बट स्टिल टीचर्स आर फाइन. कुड बी टीचर्स आर इनएक्सपीरियंस, दैट इज अ प्रॉब्लम. बट इफ समटाइम्स टीचर्स डू नॉट टू बी फाइन, कभी कभी आप में कमी रहती है कि आपको कॉम्पिटिशन नहीं मिलता, and you spend your time in just attendance marks. And of course the third thing which I've of course told you. तो इस प्रॉब्लम यहाँ पे आती है और आप प्रैक्टिकल चीज़ों में कम फोकस करते हो. और अगर मैं आपको कुछ पढ़ के बताऊं जो मुझे मिलते हैं, जो लोग जिस तरह के मोटिवेशंस और कवर लेटर्स भेजते हैं, उसमें वो चीज़ साफ चीख चीख के कहती है कि अगर हमने इस इंसान को रख लिया, ये हमारा जीना हराम कर देगा. सो दैट इज द रियल फैक्ट. तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. ऑफ कोर्स इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा एज टू हाउ टू इफेक्टिवली राइट सेंटेंसेस फॉर्मेशन, जो हमें आज तक इंग्लिश क्लासेस में सिखाया नहीं जाता. दैट आई ऑल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू properly introduce yourself to your employer, how to convince him on how to or how you will help him. Convincing के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. जिन जिन टॉपिक्स में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आई विल फॉर श्योर ट्राई टू मेंशन ऑल द वीडियोस दैट आई हैव ऑलरेडी मेड. सो आई थिंक 23 मिनट्स हो गए हैं, 25 पे क्लोज करते हैं. लेट्स नॉट स्ट्रेच दिस एनी फर्दर. सो डू वी हैव any kind of a doubt or any kind of a question that is bothering you? Okay, I appreciate your all the nice comments. I appreciate the support. How can I identify grade stop attendance? I think yes, most of the questions have been answered. Okay, then I don't think we need to stretch this any further if all the questions have been answered. I appreciate your time, and as I've said, I will mention the list of videos which I've already made, and you can always just have a look at them and get the right motivation. And to be honest, the worst thing you can do is get demotivated. That is the worst thing you can do at this point of time. See, anything is possible. There is nothing that is absolutely impossible. इस वीडियो में मैंने कई वीडियो में मैं इसका प्रूफ आपको दे चुका हूँ. सो एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी अगर उसने चलो वो 5 साल वो चीज़ें नहीं करी, स्टिल ही विल स्ट्रगल एंड ही विल काइंड ऑफ रीच दैट. इट्स जस्ट दैट आई वांट यू टू नॉट अवॉइड दैट मच स्ट्रगल, और थोड़ा स्ट्रगल करके आप कहीं ना चीज़ें समझ जाओ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. And once again, thank you so much for your comments and thank you so much for watching. Have a nice evening.